Good evening, you're watching the prime time on Hornbilltv. Let's have a look at the news headlines. The central government on Thursday reimposes Armed Forces Special Powers Act to the area's jurisdiction of 6 more police stations in Manipur. These 6 police stations, 5 belong to Valley and 1 belonging to the Hill district. Union Home Minister Amit Shah hits out at Hemant government and alleged that the Jharkhand Mukti Morcha was mired in corruption, and if the BJP came to power, it would wipe out the infiltrators from the state and would bring a law to return the encroached land of tribals. Donald Trump, while expanding his cabinet with key announcements to run the US government after coming to power, announced the appointment of first Hindu Tulsi Gabbard as the Director of National Intelligence. With the Supreme Court applying brakes on bulldozer action, opposition leaders on Wednesday hailed the judgment and took a swipe at the BJP, saying the apex court has parked the bulldozer in the garage forever. Let's have a look at the news in detail. Central government on Thursday reimposes Armed Force Special Powers Act to the area's jurisdiction of 6 more police stations in Manipur. These 6 police stations, 5 that belong to the Valley and 1 belonging to the Hill district. According to notice given by Ministry of Home Affairs, the 6 police stations, namely Sekmai, Lamsang, Lamlai, Jiribam, Lemakhong and Moirang police stations, will be imposed with AFSPA with immediate effect. Lamsang and Sekmai police stations comes under Imphal West districts, which is mostly dominated by Meitei population, while Lamlai police station comes under Imphal East district and it is also mostly populated by Meitei population. The Lemakhong police station comes under Kangpokpi district and it has become one of violence-hit regions due to Meitei and Kuki population in nearby areas, while Moirang police station comes under Bishnupur district and it is also a Meitei-dominated area. However, the area is also affected by ethnic violence in the recent past. Jiribam police station comes under violence-hit Jiribam district, which is located near the neighboring state of Assam, and the district is equally inhabited by Meitei, Kuki and Bengali-speaking population. A large number of additional security forces have been moved to the state just a day ago. According to reports, 20 more companies of Central Security Forces have moved to the state on Wednesday. The decisions of additional security forces and AFSPA reimposition in 6 police stations can be seen as an effort to contain the violence in the state. Union Home Minister Amit Shah hits out at Hemant government and alleged that the Jharkhand Mukti Morcha was mired in corruption, and if the BJP came to power, it would wipe out the infiltrators from the state and would bring a law to return the encroached land of tribals. Addressing an election campaign in Giridih, Amit Shah shared his concerns about allowing the infiltrators to enter Jharkhand and alleged that these infiltrators marry innocent locals and encroach on the lands. The Home Minister said that these infiltrators enter Jharkhand and marry innocent local girls for the 2nd time, 3rd time and encroach on the lands, and continued that they will bring a law that these encroached lands would have to be returned back to the tribals. Elections on the remaining 38 seats will be conducted on November 20. The counting of votes will take place on November 23rd. झारखंड पूरे देश में सबसे समृद्ध राज्य है। झारखंड के पास धरती माता के पेट में इतना खनिज है कि ये सबसे समृद्ध राज्य है, मगर झारखंडी गरीब। यहां का युवा नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, बेंगलुरु, गुजरात, राजस्थान कहां जाता है। युवाओं में आपको वादा करता हूं, 5 साल में इतने कल कारखाने लगाएंगे कि झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और बूढ़े माँ बाप के साथ
झारखंड में ही नौकरी मिल जाएगी, बाहर नहीं जाना। मगर आप लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी भाई? आपकी नौकरियां तो वो घुसपैठिए खा गए, घुसपैठिए खा गए। एक घुसपैठ झारखंड के अंदर जो हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, उनसे आप सहमत हो क्या? जोर से बोलो, सहमत हो? मैं आज कहकर जाता हूं, यहां से विधायक है कल्पना जी। कल्पना जी, आपके पति के नाक के तले आदिवासियों की, ओबीसी की आबादी कम हो रही है क्योंकि घुसपैठिए आ रहे हैं, मगर आपको इसमें वोट बैंक दिखाई पड़ती है। झारखंड की महिलाओं की उनके साथ दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करते हैं और उसकी संपत्ति हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं आपको, ये नरेंद्र मोदी जी का वादा है, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर झारखंड के बाहर निकालेंगे। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जो आ गए हैं उनको चुन चुन कर निकालेंगे और आने वाले दिनों में इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर न पार पाए, ऐसे झारखंड की करेंगे। और एक घुसपैठिए समझते कि भूमि हमने जो हड़प ली है ये आपकी नहीं है, झारखंड के आदिवासी ओबीसी की भूमि है। हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि ना आगे भूमि मिलेगी, ना दूसरी तीसरी पत्नी मिलेगी, और लिया हुआ भूमि भी सरेंडर करना पड़ेगा। जो भूमि ले गए हैं वो भी झारखंड की बिटिया को वापस देनी पड़ेगी, ऐसा कानून लेकर आएंगे। We'll be right back after a short break. Welcome back after the break. Let's continue with the news. The father of 2 kids who went missing along with their mother and 3 other members of a family from Jiribam district after an encounter between armed militants and CRPF has appealed for their release and also requested the authorities to find them as soon as possible. The father, Laisharam Herujit, an IRB personnel posted at Imphal in an interview with the news channel, appealed to any person or group that may have held his family hostage to release them, saying they are innocent. Herujit got a call from his wife when shooting and arson broke out in Jiribam's Borobekra on Monday. The call got disconnected, and when he dialed her back, he found the phone was switched off. About an hour later, while they went searching, a Bengali friend of his wife told them that she saw them being taken away in a boat by armed people. They are all innocent. My 2 children cannot even speak yet, said Herujit while appealing for their release. After a gunfight between security forces and armed militants in Jiribam, Jakuradhor and Borobekra area, leaving 10 armed militants dead, 6 Meitei people living in the area went missing, including 3 women and 3 children. Search operations by security forces have not yet yielded any results of their whereabouts. I mean, Laisharam Herujit, I live from Tambalkong.
गवर्नमेंट सर्विस थबक मचा अम तौर लेजबनी आइगी हुजिक मांग थीब खंगद्रिबा मियोय तरुक असिदा आइगी नुपी आइगी अंगांग अनि इनेम्बोक नुपी की मसे मोय फैमिली इमुंग अमतगी केनोनी पुलप मोय तरुकमक अदो हुजिक मोयगी अहन पाव मोय हुजिक सिदा लै नत्रना सिरे सिदे कैमता मोयगी अहन पाव फंगद्रि हुजिक पोकी मनुंग सिदा हाइतारे केसु खगजे तबा केनो आक्तानी अंगांग आक्तानी अना अंगांग अनि तो मरोनजु सुना थोक्त्रिम अंगांग अम्मा चौबदुजु अना टेक्रा कायदुना फजना थादोपिरागा कोई इमुंग मनुंगदा फजना सिनाबिनाबा आइना मयामदा हाइजनिंगी. After 4 days of intensive protest by aspirants, the Uttar Pradesh Public Service Commission has announced that the preliminary examination would be conducted in a single day. The CMO stated that Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath took cognizance of the demand of students in Prayagraj and asked the Commission to take necessary decisions by communicating and coordinating with the students regarding the PCS Preliminary Examination 2024 in one day. A committee has been formed by the Commission for RO-ARO Pre-Examination 2023. The committee will consider all aspects and submit its detailed report soon. BJP MP Dinesh Sharma meanwhile said that this was a big step taken by the CM in students' interests. Opposition always finds issues to do politics. A committee has now been formed by the Commission for RO-ARO Examination 2023. The committee will consider all aspects and submit its detailed report soon. देखिए, ये एक बहुत बड़ा मुख्यमंत्री का छात्र हित में लिया गया निर्णय है और मुख्यमंत्री जी ने पहले ही आयोग के लोगों से कहा था कि वो जो छात्र हैं उनसे संवाद बनाएं, समन्वय बनाएं और समन्वय बनाकर एक उचित निर्णय ले जो छात्र हित में हो. मुख्यमंत्री जी कृत संकल्प रहे हैं प्रारंभ से ही कि परीक्षाओं में नकल ना हो. वो इस बात के लिए संकल्प रहे हैं कि जो मेधा शक्ति है उसके साथ में अन्याय ना हो और उसको परीक्षा में उसकी मेहनत का उचित फल मिल सके. पिछली सरकारों की तरीके से जिस तरीके से चिटों पर अपॉइंटमेंट होते थे वो प्रक्रिया ना हो, उसके लिए कठोरतम नियम भी मुख्यमंत्री जी ने बनाए हैं. जो छात्र आंदोलन था, छात्र आंदोलन में छात्रों के साथ पूरी सरकार उठ खड़ी हुई थी. हमारे उप मुख्यमंत्री ने पहले ही दे दिया था ट्वीट करके कि जल्दी इसके निर्णय होगा और लेकिन कुछ विपक्ष के लोग हर चीज में राजनीति खोजते हैं. अपने असामाजिक तत्वों के माध्यम से शांतपूर्वक और मेधा शक्ति के अच्छे विद्यार्थियों के बीच में भी वो हिंसा का तांडव कराना चाहते रहे, लेकिन वो असफल रहे. उनको इससे बाज आना चाहिए और उनको जो छात्र हितों में अपने शासनकाल में जो पिछली सरकारों ने खेल किया था और उसके कारण जो छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ था वो उनको याद करना चाहिए कि अब इस सरकार में छात्र हित में ही निर्णय होंगे, दूसरे निर्णय कोई नहीं हो सकते. जो आरओ की और एआरओ की परीक्षा थी 2023 की, सरकार ने उसके लिए एक आयोग की समिति का गठन किया. आयोग ने एक समिति का गठन किया है और आयोग की जो द्वारा गठित समिति है वो सभी पहलुओं पर विचार करके अतिशीघ्र इसकी विस्तृत रिपोर्ट देगी. अभी जो है परीक्षा स्थगित की गई है और जल्दी ही अधिसूचना जारी करके फिर से परीक्षा जो एक दिन में एक पाली में परीक्षा कैसे हो इसकी पूरी विस्तृत जानकारी बाद में आएगी. चीजें अगर सरकार रखती है वो छात्र हित में रखती है और अगर किसी कारण से छात्र को या किसी भी जनता के किसी भी पक्ष को किसी भी विषय में कोई चीज में विसंगति दिखती है तो ये सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को मानने वाली सरकार है. ये अपने निर्णयों का समीक्षा भी करती है, पुनरावलोकन भी करती है और उसके बाद जो सबकी जो इच्छा होती है छात्र हित में या जनता के हित में वो निर्णय सरकार लेती है. इससे अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा और निर्णय क्या हो सकता है. विपक्ष को बाज आना चाहिए जो वो हिंसा फैलाना चाहते थे. विपक्ष को बाज आना चाहिए जो छात्रों के हितों में भी अपनी राजनीति को खोज रहे थे. वो मुद्दा तलाश रहे थे कि उपचुनाव में वो किसी प्रकार के राजनीतिक खेल खेल सकें. उनकी कोई भी संभावनाएं योगी जी के रहते पूरा नहीं होना है. योगी जी चुनावी दौरे पे जरूर थे लेकिन उनका हर पल छात्रों के हित में क्या हो रहा है इसके लिए लगा था और उन्होंने पूरा चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सबसे संयम बनाने के लिए बोल रखा था कठोरता के साथ में. और आयोग से भी कहा था कि तुरंत पूरी विस्तृत रिपोर्ट को बनाकर आप प्रस्तुत करें. तो
विस्तृत रिपोर्ट में और समीक्षा में समय लगता है, इसलिए 1-2 दिन का समय लगा। पहले से ही आयोग के सचिव छात्रों से कहते आए थे कि आप हमको 1-2 दिन का समय दें, और वो 1-2 दिन का समय पूरा होते ही निर्णय आ गया। Reserve Bank Governor Shaktikant Das said that the central bank has ensured a soft landing after having faced with various headwinds, but risks of inflation coming back and growth slowing down do remain. Speaking at the CNBC TV 18 Global Leadership Summit on Thursday, the RBI governor said risks of inflation is coming back and it may impact growth. Central banks across the world resorted to tightening of monetary policy because of high inflation due to supply chain disruptions and the war in Ukraine. Das said that in his last monetary policy statement, he anticipated that September and October inflation prints were expected to be higher, and that was realized when the official data were made available. RBI kept the policy repo rate unchanged at 6.5% for the 10th consecutive time. The central bank's commitment to bringing inflation down to its 4% target on a sustained basis continues to face challenges due to ongoing food inflation. The next RBI monetary policy meeting is due in the first week of December. Proving his mettle, Donald Trump is set to become President of the United States once again after a historic victory. Now Donald Trump is expanding his cabinet with key announcements to run the U.S. government after coming to power. Donald Trump on November 13th announced appointment of Tulsi Gabbard as the Director of National Intelligence. Notably, Tulsi Gabbard is the first U.S. Hindu lawmaker to be named as country's spy chief by Donald Trump. Trump has announced other key appointments for his 2024 administration, including big names like Elon Musk. Tulsi Gabbard is the first U.S. Hindu lawmaker to be named as country's spy chief by Donald Trump. Trump has announced other key appointments for his 2024 administration, including big names like Elon Musk. Notably, at 43, Gabbard will step into the pivotal role of overseeing the nation's intelligence agencies while serving as the president's chief advisor on security matters. Once viewed as a potential running mate for Donald Trump, Gabbard is now tasked with leading the intelligence community. In a statement on Wednesday, Trump described Gabbard as a proud Republican who can bring her fearless spirit into the intelligence community. Time for a short break. The Jawaharlal Nehru National Solar Mission, or the National Solar Mission, was launched on 11th January 2010. JNSM is a major initiative of the Government of India with active participation from states to promote ecological sustainable growth while addressing India's energy security challenges. The National Institute of Solar Energy has assessed the country's solar potential of about 748 GW, assuming 3% of the wasteland area to be covered. Welcome back after the break. Let's have a look at more news. Congress leader Ashok Gehlot on Thursday took a hit at the ruling BJP government over the law and order situation in the state following the assault on sub-divisional magistrate at polling station in Deoli Uniara Assembly constituency.
Former Chief Minister and Congress leader Ashok Gehlot, while talking to the media, said that the credibility of police in Rajasthan has ended and that the law and order has collapsed in the state. Speaking to the media over the Tonk SDM assault case, Gehlot said that the credibility of police in Rajasthan has ended. Law and order has collapsed. Why did a situation arise where an SDM was slapped? This incident was not a minor incident. The BJP has no tolerance towards suggestions from the opposition, he said. तो कांग्रेस में आ चुके थे तो किसकी चेहरे खड़े हुए हैं, ये बात भी मैं समझता हूँ कि सोचने की है। बीजेपी ने खड़ा किया चुनाव जीतने के लिए, क्या किया इसकी जानकारी भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ले रही है कि इस नौबत क्यों आई। जो कल की घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब कल की घटना के बाद में आप बताइए सरकार का इकबाल बचा है क्या? सरकार का इकबाल होता है गवर्नेंस के लिए, शासन तब होता है तब अच्छा गवर्नेंस में इकबाल बना रहे। इकबाल ही खत्म हो गया। आप जो घटना घटित हुई है कल, वो मामूली घटना नहीं थी। एसडीओ लेवल के अधिकारी को आप थप्पड़ लगाए कोई व्यक्ति, ये स्थिति बनी क्यों और इतनी हिम्मत क्यों हुई किसी की? तो कहाँ सरकार का इकबाल है? हम बार बार सरकार को कहते हैं आप गुड गवर्नेंस दो, पूरी प्रदेश की जनता का भला हो। हम आलोचना भी करते हैं तो उसको सकारात्मक रूप में लेना चाहिए, और अगर बातों में दम नहीं है हमारी बातों में, आप खंडन करो, दम है तो सुधार करो, जनता का भला हो। यही तो डेमोक्रेसी में होता है। पर बीजेपी के तो जैन में उनकी फितरत में है ही नहीं कभी कि आप विपक्ष की भावनाओं का आदर करो, बात सुनो, आलोचना को सहन करने की शक्ति पर रहे आप में, ये तो है ही नहीं उनके अंदर। जिले खत्म कर रहे हैं, नगर निगम खत्म कर रहे हैं, साल भर हो जाएगा अगले महीने, एक साल तो हो गया, ना जिले खत्म कर पाए, ना नगर निगम वापस कर पाए हैं, और भी कई बातें इन्होंने बोली है। तो आप देखिएगा कि फैसले क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जो करना फैसला तो करो, 6 महीने के रिव्यू मीटिंग के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। हमारे वक्त में 6 महीने के जो फैसले हुए थे, आपको उनमें डाउट है मान लीजिए, आप फैसला कीजिए उसके ऊपर। 6 महीने की कमेटी बना दी उन्होंने रिव्यू करने की, फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर हमने गलतियां करी है आप सुधार कर लीजिए, आप कुछ भी फैसला कीजिए। फैसला कर नहीं रहे हैं और बार बार पिछली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा, कब तक लगाओगे? कब तक लगाओगे? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना? अब तो आप बताओ आपने 1 साल में क्या काम किए हैं? अब वक्त आ गया, जनता पूछेगी आपसे, मीडिया वाले पूछेंगे कि छोड़िए अब पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया नहीं किया, सरकार चलेगी उनकी। तो आप बताइए आपने साल भर में क्या किया उसके बाद? अब वो वक्त आ गया है। और आपका गृहनगर में इतना बड़ा 17 दिन हो गए हत्याकांड, देखिए हत्याकांड हो गया, बहुत भयंकर आक्रोश लोगों के अंदर। जिस प्रकार का हत्याकांड हुआ है वो भी मेरे ख्याल से पहली बार सुनने में आया है कि इस प्रकार से आप जेसीबी के माध्यम से आप गड्ढा खोद के आपने लाश को खुद कर दिया। पहली बार। ये भी इकबाल का सवाल है। सरकार का इकबाल खत्म होता है तो लोगों को भय खत्म हो जाता है, भय खत्म होता है तो फिर लोग कानून को हाथ में लेते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर यही हालत बने हुए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर हालात यही हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं। That is all we have for now. For more news and the latest updates, keep watching Hornbill TV.